So good morning, guys. So how was you? Currently we are talking about Nifty and Bank Nifty level. So Nifty level was I think very much quite sure like 15,000 तक और 14,000 इसके लेवल है. अगर थोड़ा और ज़्यादा ही क्या बोलते हैं 15,000 तो लेवल हो ही सकता है जस्ट बिकॉज कि अभी बहुत ज़्यादा ही आने वाला है लॉकडाउन. So that's why you have to take a caution and trade accordingly because today the market was I think 200 points up, like 17,200 was touched today, but as as the day passes or as the time passes, it moved. It shows a positive side of I think 14%. तो 14% या 14 points तो I think is a very good number कि भाई नीचे जाने वाला है. So अगर if you are today like आप क्या ले सकते थे तो 16,600 का जो ये वाला जो कॉल है, अगर इसमें इसकी का चार्ट देखूंगा तो आई थिंक इट विल बी सपोर्टिंग ऑन 50 डे का जो मूविंग एवरेज या 30 डे का मूविंग एवरेज है. सो 30 और 50 डेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अभी जो डाउनफॉल आया है जो टॉप से मारा था 18,800 का, आफ्टर दैट ये वाला जो लेवल है वो 30, 20 और 50 डेज में ही पड़ रहा है. सो इफ यू आर वेरी मच अवेयर दैट कि क्या होना चाहिए और हाउ कैन यू प्ले अलॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, देन आई थिंक दिस लेवल वाज क्वाइट गुड. लाइक एक ही वीक में देखिए, एक ही वीक में पूरा खेल हो गया है. यहाँ पे इसने 80 रुपीज़ का हाई भी मार दिया. लाइक आई वाज सेइंग हाँ सपोर्ट तो नहीं रहा है बट ये इसका रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस बहुत इजी टूट जाएगा बिकॉज द डेज एवरेज ना बस ये जो डे का जो हाई था और जो डे का जो लो था ना उसके बीच में ही है. सो 15 डेज का 10 जो 10 जो कैंडल है उसका. सो यहाँ से आप 30 रुपीज़ को 100 रुपये में देखते हो बन सकते हैं बिकॉज काफ़ी एवरेजिंग हो चुकी है यहाँ. लाइक यहाँ पे भी बाइंग है अच्छी खासी, यहाँ पे भी बाइंग है और इतनी ज़्यादा बाइंग और इतनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल है और जो सेलिंग है वो बहुत छोटे छोटे आ रहा है जस्ट बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा जल्दी हाई मार दिया तो सेलिंग तो आना ही है कि भाई इतना नहीं जाएगा इतना नहीं जाएगा. बट स्टिल देर इज अ बाइंग ऑफ बाइंग साइकिल ऑफ 50 मिनट की बाइंग साइकिल में दो कैंडल मेरे को दिख रही है. सो दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन गो 16,200 इन नॉट दिस वीक और इन सम अदर वीक, बट यस देर इज पॉसिबिलिटी कि इस वीक में हो जाए बिकॉज वंस द न्यूज़ विल बी out, it will show कि yes it is going in this direction with a very good momentum I think. So अगर मैं इसको मोमेंटम में देखूँ तो yes there is a negative momentum और नेगेटिव मोमेंटम 3 और 10 होने का भी, अगर 50 मिनट में 10 है मतलब नेगेटिव है तो अगर इसको 10 मिनट में 10 की जो कैंडल है 10 का जो मोमेंटम है 10 कैंडल्स का तो वो भी 100 जाने में थोड़ा टाइम लगता है. इट्स द मैटर ऑफ आई थिंक 1 hour. 1 hour is more than enough in this kind of market. So but for that we have to check fin nifty also or in some other stock also, but like I said like कि stock मतलब सारे के सारे स्टॉक को एक बार चेक करना वो नहीं रहेगा बिकॉज सम कुछ सारे स्टॉक and all the stocks are interlinked with each other. So there is a possibility that if the holding stock is uh, like the leading one in the downfall, so there is possibility कि बहुत जल्दी हो जाएगा. But the holding stock मतलब stay strong, its moving average of 50 days, then there is a possibility कि हाँ थोड़ा sideways movement is possible. For that I think we have to look into some other factors also, but for nifty we look into something which is very much common practice, like the daily chart. The daily chart show you that what will be the momentum if it is there. So यहाँ पे जैसे दो कैंडल ऐसे बन गई है एंड इफ यू कैन सी कि बीच में कहीं सपोर्ट नहीं मूविंग एवरेज में, यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट इज 36,200 मतलब 16,200 एंड आफ्टर दैट यू कैन लुक कि भाई दो इन ओनली मतलब दीज 2 days द कैंडल वाज इन green and after and since the high of 18,600 it is showing a momentum of this like अगर ये कब था मतलब 19-10 को था यानी आई थिंक एक महीने पहले, अगर एक महीने पहले ही मैं ये वाला कॉल ले लेता सो उसका प्राइस क्या चल रहा था लाइक दिस वन 100 रुपये का जो है अभी. सो लेट मी चेक. So on a daily chart, obviously we look into it a daily chart और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा हाँ भाई साहब तो ये पड़ रहा था मेरे को 1 रुपये का.
तो 1 रुपये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ भाई गिरने वाला है, बट देयर इज अ चांसेस एंड इट वाज इन ट्रेडिंग इन अराउंड 100 रुपये पे। तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं। एंड स्टिल इफ आई लुक इनटू द फेब्रुअरी वाला मंथ, लाइक अभी तो वैसे भी ईयर एंडिंग आने वाला है और बजट्स आएंगे, सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू लुक इनटू दिस पॉइंट आल्सो, लाइक द बजट पर्सपेक्टिव। तो बजट पर्सपेक्टिव यू हैव टू थिंक कि हाँ भाई बजट अच्छा हो कि गरा होगा। लाइक द प्रीवियस सिचुएशन वाज लाइक दिस कि द बजट वाज वेरी मच इन अ positive way, but still but the government now has don't have that amount of money. So what we can do, we can look into a situation where we see a very good downtrend from there, like agar it is a showing around if it is showing around 18,000 of top line, then what should be the bottom line? The bottom line is there, like it is in around 15,000. So 15,000 is if you take 15,000 as a bottom line, and if you trace down all those points or all those subnormal or the knowledge we get, then you can see ki bhai where is that yes, like the 24th February, like on March there will be what say. So you can see that मतलब they everyone bought that call or put, everyone bought that put like 1500 या 1600 का, so which is a very like not a good sign for a, लाइक यू कैन से ये तो बंद ही कर दिया हम लोगों ने भाई। सब लोग बजट को देख के ही ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे तो सेलिंग भी कर दी। यहाँ पे यू कैन सी लाइक 18,000, और ये तो लेवल ही इट्स नॉट इवन visible or it's not even possible that it can go till that point, but they close that level. Similarly if you look into January का 727, so just because we have festive month na, so a lot of buying or selling happen in this month only. After that, there are only just covering or all those things, but there is a possibility that it can be a positive sign. There is a possibility there is a negative sign depending upon the marketing. But the global scenario is saying that we don't have that much amount of money on us, and the FIIs are going on. If the FIIs will come back after December or after the New Year, then there is a possibility that we can get a very good hefty amount of return on those calls. Like अभी ये जो कॉल चल रहा है, ओके अभी तो थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल इफ यू कैन लुक इनटू 20 जैन, लाइक वो तो खुला भी नहीं है, शायद ये 1-2 रुपए का मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द लाइक यू कैन सी लाइक दे आर सेलिंग इट ना, नो वन इज बाइंग ऑन इन दिस रीजन. Why they are not buying it on these, because it's not open obviously, and there is a speculation which is happening around the market. So it's the same thing. Like अगर मैं 30 दिसंबर का देखूंगा the new year time, which is just a month away from there, and then you can see that everyone is buying this side and not on this side. Like people are buying from in this side, but they're not that much confident it going to happen or not. But on this side, if you look into the number of percentage that is surge in this area, like 18 lakhs, 15 lakhs, and if you look into this percent, like there's a sort of hedging or selling or short selling, but you can say, but still the thing is not that much clear because there is a lot of data. And as on मतलब अगर ये डाटा को मैं ML में भी थोड़ा हैच करने की कोशिश करूंगा, then it will show a अलग ही sign, because it need a quantum computing of input and output, because everyone is using machine learning nowadays, but the machine learning is depend upon some variables, and variables can be manipulated on a daily or a weekly basis. So it totally depend upon the scenario. Like if you look into this point, like it is showing a 14,000, मतलब 1400 का एक का लॉस दिखा रहा है, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा है. इट्स अ लॉस टू द मार्केट NSE. So it is all showing NSE's losses. It's not a loss to the any customer or what say any retailer or anyone, because it's depend totally upon the exchange ना कि exchange कैसा behave करेगा. If the exchange is behaving positively, then it is obviously it will show a positive return or negative return on this case. But the idea of
getting a hand to it is like we मतलब we will able to see a lot of मतलब रिजल्ट लाइक अगर मैं 9 दिसंबर का ही अगर मैं देखूं तो इट्स नॉट दैट मच मतलब फॉरवर्ड ना कि इसमें तो आप नीचे का लेवल भी टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि जो टॉप लाइन है वो तो बहुत सस्ता हो गया है। आफ्टर दैट इफ यू लुक इनटू द बॉटम लाइन व्हिच इज 15,000 आई डोंट थिंक 15,000 इज दे आर शोइंग 15,000। लेट मी रिफ्रेश इट। ओके आई थिंक वो तो शो कर रहा है बट स्टिल एक जो लेवल है वो इतना इजीली तो नहीं टच करता बट स्टिल लेट मी चेक इन माई मोबाइल कि हाँ भाई क्या चल रहा है चीज़ें। एंड बेसिकली तब तक आप मतलब अपन न्यूज़ देख सकते हैं कि व्हाट इज़ इन द न्यूज़। आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू यू विथ अ गुड अ वेरी गुड ऑप्शन लाइक अगर अब मैं बिजनेस न्यूज़ की भी बात करूँ सो इट्स नॉट इट इज़ लाइक इकोनॉमी न्यूज़ या इंडसलैंड बैंक और डीसी जो बैंक है बेनिफिट चेंज द नॉर्म ऑफ हाइकिंग प्रमोटर स्टेक। सो प्रमोटर स्टेक है उनने भी बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया है इंडसलैंड बैंक में। वो ऐसा क्योंकि ऑब्वियसली लाइक लोगों ने भी तो हाँ नीचे तो हैक चला दिया 15,500 तक लोगों ने 17 रुपये की चीज़ हो गई है और आज तो उसका प्राइस 9 टाइम्स हो गया था। मतलब बहुत आउट ऑफ द मनी लोगों ने बाइंग कर रही है। ओह माय गॉड ये बहुत ज़्यादा है। मतलब 2 रुपए की चीज़ जो थी आज वो अराउंड 15 रुपए की हो गई है। मतलब कल जो 2 रुपए की थी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई हो सकता है जस्ट बिकॉज द मोमेंटम इज इन नेगेटिव साइड ना। तो अगर नेगेटिव साइड में आप जितना भी मतलब बाय करोगे तो उतना ही आपको एडवांटेज रहेगा। लाइक अभी तो कुछ लेवल खुले भी नहीं है। लाइक इफ आई लुक इनटू दिस लाइक द पुट ऑफ दिस डे ओनली तो वो कितने रुपए हो गए भाई साहब। वो पहले 5 पैसा था और आज 3 रुपए 30 पैसा हो गया। सो यू कैन लुक कि हाँ भाई लोग इतना तगड़ा क्या बोलते हैं बाइंग करके गए हैं और होल्ड भी करा है जस्ट बिकॉज दे नो कि हाँ मार्केट गिरेगा तो 1 या 2 वीक में ही पूरा सो जाएगा। और उसमें अगर मैं वैल्यू भी देखूँ इट्स नॉट शोइंग ओवर देयर बट यस इट इज शोइंग इन माई मतलब मोबाइल। सो अगर उसमें वैल्यू भी देखें तो 8 लाख से 10 लाख लोग हैं जो और जो टर्नओवर का जो रेशियो रहता है और जो इफेक्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। बीटीएस बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि गिरेगा ही गिरेगा। अगर मैं इसका सेम अगर मैं पॉजिटिव साइड में देखूं कि हाँ भाई क्या रह सकता है तो मेरा जो टॉप लाइन है वो है मेरी अ, अगर मैं देखूं 18,000 तो 18,000 का 1 रुपए का भाई साहब अभी। और आज भी बहुत सारे लोग बाइंग ही करके गए। सो वो चीज़ अगर मैं देखूं तो वो पुट कर सकता है यार। मतलब वो अराउंड कितने रुपए से हो गया है मतलब विद इन अ कपल ऑफ डेज विद इन अ वीक विद इन 2 वीक्स 350 रुपीज से लेके 3 रुपए हो गया। सो 10%, 10% नहीं मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ले सकते हैं। 100 टाइम्स वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज होने में मीन्स इट्स लॉन्ग गेम इट्स बॉल गेम। अभी कहीं पे भी हो जा सकती है बट स्टिल द बाइंग द सेलिंग प्रेशर इज ह्यूज बिकॉज ऑफ द मार्केट पैनिक and and some of the investors will be this taking the risk of getting into मतलब बाइंग मोर ऑफ द स्टॉक दैट विच विल बी पिक्ड। लाइक आज पे अगर मैं देखूं तो जो टॉप बायर थे एंड द टॉप सेलर्स दे हैव देयर own market like top gainers. Who was the top gainers? If you look into the top gainers it is around the number is huge like I don't remember like 10% BML upper circuit is like a huge surge in price or and if you look into something which is not that easily manipulated like it's not talking about 10-20 रुपए का शेयर it's a 2,000 रुपीज शेयर और वो भी 10% सर्च करना है। इट्स अ ह्यूज थिंग दैट यू कैन लुक इनटू मतलब कि मार्केट में हो सकता है स्पेकुलेशन है बट देयर बायर्स आर देयर
Kotak Mahindra Bank, if you look into it, it's like 5% up. Or if any correction will happen, the banking sector will lead it from the front, and that is everyone is saying that, not even me, but everyone. And if you look into यस 33, हाँ भाई साहब बहुत तो हो गया है, क्योंकि लोगों ने बाइंग करना चालू कर दिया है दिसंबर में, तो उसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है, मतलब जो उसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव साइड में ही है। डेरिवेटिव नेगेटिव साइड में, तो यू कैन लुक इनटू समथिंग मोर लाइक टीसीएस, एचसीएल, ओके, विप्रो इज देयर, बजाज फाइनेंस, like top all stocks are very good, like HDFC, Tech Mahindra, SBI Life, Infosys, Tata Motors, Tata Steel is there, Bharti Airtel is there, Asian Paint is there. Okay, so these are like the top stocks. So the people are buying top stocks. So there's a possibility कि हाँ हो सकता है निफ्टी को थोड़ा संभालने के लिए कर रहे हो, but the underlying was very much bearish. And if you look into it's a like in BSC, तो BSC उसके बाद अगर मैं BSC 100 में देखूँ और सेंसेक्स में देखता हूँ भाई साहब, okay, so power stock is there, green stock is there, and like stocks are there, which is in a positive momentum or a negative momentum, but still it totally depends upon the number of like retailers, like on, and or I will say big money, because big money are waiting for this kind of short covering or Harvard news, BML, like you can see it, bhai saab 13% up, Raymond's 10% up, Dr. Lapat Lab, okay, ये तो होना ही है, ABB, Future Retail is also there, और Quest Corporation, Solar Activity, Triveni Turbine is up और 3%, हाँ मतलब 130 है, 158 है लो इसका, लास्ट प्राइस इसका, ओके। वोडाफोन आइडिया इज मतलब वो भी 10%, तो 20% कमा दिया है, 2 रुपये, बट हाँ ठीक है, सब हो सकता है इसमें भी, क्योंकि अभी सबने क्या है चार्जेस बढ़ा दिए हैं, चार्जेस बढ़ा दिए तो जो कस्टमर है वो लोग कहाँ जाएंगे, या तो सिम चेंज करेंगे या फिर अपना जो नेटवर्क है उसको चेंज करेंगे। सो ये तो सबसे बड़ा गेम तो यही है। उसके बाद ई सैप, अतुल इज देयर, HDFC, फ्यूचर कंज्यूमर इज ऑल्सो लाइक, हाँ भाई 7 रुपये, तो 1 रुपये 1%, 2% तो ये भी बढ़ गया, तो ये भी अच्छा है। आफ्टर दैट वी हैव समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक इन इट्स ओन। हाँ भाई, मतलब पढ़ने वालों की संख्या तो है, ऐसे 500 के स्टॉक है तो 20 वो बढ़ रहा है। सो आफ्टर दैट वी विल डू अनदर सेशन टुडे, बट आफ्टर आई थिंक 10 to 20 minutes later, so stay tuned, तब तक के लिए रखते हैं, मिलते हैं, बाय।